Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to solve one of the question from NEET 2021. The question is, in spite of interspecific competition in nature, which mechanism the competing species might have evolved for their survival? The options are resource partitioning, competitive release, mutualism, predation. सो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन के पूरे डिटेल्स देखेंगे. वी विल सी ऑल द डिटेल्स ऑफ ऑल द ऑप्शंस and also the answer of this question. Interspecific competition. It is a form of competition in which individuals of different species compete for the same resource in an ecosystem. तो ये जो कंपटीशन है ये दो इंडिविजुअल्स में होता है जो इंडिविजुअल्स डिफरेंट स्पीशीज के होते हैं. Now the first option of the question is resource partitioning. But before studying the details of resource partitioning, you should know the concept of niche. Now, what is a niche? Niche is a particular area within a habitat occupied by an organism. Or you can also say it is a functional area of an organism in ecosystem. So जब भी organisms ecosystem में रहते हैं, एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहते हैं, उस पर्टिकुलर हैबिटेट में जो एक पर्टिकुलर फंक्शनल एरिया होता है जहाँ पे वो जहाँ का वो बायोटिक फैक्टर्स यूज करते हैं, जहाँ पे वो पर्टिकुलर बिहेवियर शो करते हैं, वहाँ का फूड सोर्स यूटिलाइज करते हैं, वो जो फंक्शनल एरिया होता है हैबिटेट का उसको निश कहते हैं. अब ये फंक्शनल एरिया एक ही ऑर्गेनिज्म का नहीं होता. सेम फंक्शनल एरिया दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का हो सकता है. और जब ऐसी कंडीशन आती है, और यहाँ पे हमने ऐसे लिखा है कि फंक्शनल एरिया ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम इज नथिंग बट द निश एंड इट मेनली इंक्लूड्स अ बायोटिक फैक्टर of that particular area, behavior of an organism in that particular area, and food source utilized by that organism in that particular functional area. And जब भी ये तीन factors सेम होते हैं दो organisms के लिए, or you can also say if that functional area is same for two or more organisms, then at that time there is competition between these organisms. बट इकोसिस्टम का और एनवायरनमेंट का ये रूल है कि वो हमेशा कंपटीशन अवॉइड करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब भी कंपटीशन होता है ऑर्गेनिजम्स में तब ऑर्गेनिजम्स का फिटनेस घटता है और अगेन उससे इवोल्यूशन की प्रोसेस अफेक्ट होती है. इसलिए ऑलवेज एनवायरनमेंट कंपटीशन अवॉइड करने का प्रयास करता है. सो यहाँ पे भी अगर फंक्शनल एरिया ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स अगर सेम हो in a particular habitat or in a particular ecosystem, और if दो organisms हो और वो सेम बायोटिक फैक्टर्स यूटिलाइज कर रहे हो, उनका बिहेवियर सेम हो और वो सेम फूड सोर्स यूटिलाइज कर रहे हो फ्रॉम दैट फंक्शनल एरिया, देन उन दोनों में कंपटीशन अनअवॉइडेबल है. बट as I have already told you that environment always try to avoid the competition, and this competition is avoided by a process by the organisms, and the process is called as resource partitioning. Now I will explain you the details of resource partitioning with giving a particular example so that you will get a better idea of this concept. But before studying the details of resource competition, you should know the concept of niche. Now, what is a niche? Niche is a particular area within a habitat occupied by an organism, or any functional area within a habitat occupied by the organism. अब हम रिसोर्स पार्टीशनिंग को डिटेल में पढ़ेंगे और उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे. So what is resource partitioning? I have already told you that, but it's
definition is when two species compete for the same resource. जब भी दो organisms एक रिसोर्स सेम रिसोर्स के लिए कॉम्पीट करते हैं, कंपटीशन करते हैं, they avoid competition by choosing different types of feeding or different foraging patterns. वो दो ऑर्गेनिजम्स जिनको सेम रिसोर्स लग रहा है, वो हमेशा कंपटीशन अवॉइड करने का प्रयास करते हैं, आइदर बाय चूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडिंग, वो डिफरेंट टाइम्स में फीड करते हैं, और बाय यूजिंग डिफरेंट फोरेजिंग पैटर्न्स, दैट इज वो डिफरेंट फोरेजिंग पैटर्न्स यूज करते हैं. Now, what is foraging pattern? Foraging pattern is the simple act of gathering food either for immediate consumption or for the future storage. So अगर दो ऑर्गेनिजम्स का फंक्शनल एरिया सेम हो, वहाँ का सेम फूड रिसोर्स वो यूज कर रहे हो, तो वो कंपटीशन अवॉइड करते हैं बाय चेंजिंग देयर फीडिंग टाइम और बाय डिफरेंट फोरेजिंग पैटर्न्स. सो यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, अगर एक ही ट्री है और दो ऑर्गेनिजम्स है लाइक स्पाइडर एंड बर्ड, एंड बोथ आर यूजिंग द फ्रूट्स ऑफ दैट प्लांट ऑफ दैट ट्री एज देयर फूड. बट अगर वो सेम ही टाइम में, दिन के समय में अगर वो गए फीड करने, तो उनमें कंपटीशन होने के चांसेस है. बट इफ द bird goes in the morning for feeding and the spider goes in the evening for the feeding, then their competition is avoided. So this competition is avoided like this: organisms choose different times for feeding, or they also choose different foraging patterns, that is they change their act of gathering food, और act of gathering food. This is nothing but the foraging patterns. So यहाँ पे हम एक most common example लेंगे, वो मैकार्थर ने दिया है. MacArthur showed that 5 closely related species of warblers living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to behavioral differences in their foraging activities. So यहाँ पे एक कोनीफर प्लांट है, और उस पे 5 क्लोजली रिलेटेड वार्बलर स्पेशीज रहते हैं, और वो कंपटीशन अवॉइड करते हैं by changing their by changing their behavioral differences in their foraging activities. They change their foraging activities, they change their feeding behavior to avoid the competition. So हम देखेंगे details of this example. So these are the 5 species of insectivorous wood warblers: Cape May, yellow rumped, black throated, green black Burnian, bay breasted. So these are the closely related warblers, live on the same conifer tree and avoid competition and coexist. So in this case, again the same diagram is there. So this is the Cape May warbler. This Cape May warbler stayed mostly towards the outside on the top. So it uses the top part of the conifer plant, but on that top part also it uses this outside portion. It feeds on this outside portion of the plant. Then second is the black Burnian. It feeds mostly around the middle interior. So middle interior जो ये part है, middle interior part है plant का, उस पे वो feed करता है. The next is the black throated green middle black throated green. It uses middle side areas of the conifer. So ये जो middle side areas है, यहाँ पे जो ग्रे पोर्शन दिख रहा है मिड वाला, वो ये यूज करता है, यहाँ पे ये रहता है. Then next is the bay beasted. This bay beasted uses central middle position. So this is central middle position is used up by this bay beasted warbler. And last one is the yellow rumped
warbler. This yellow-rumped warbler uses the lower part of the conifer. So all these are the five warbler species uses different parts of the plant. So ये सब भी warbler के species है वो different parts use करते हैं plant के and for feeding and foraging activities so that they avoid the competition and uh, as they avoid the competition their fitness is not so this is the same again same thing I have told here, only the diagram is different. The first one is the Kepme, then second yellow rumped, black throated green, black burnian and bay bisted warbler. So black areas here stylized conifers show where the feeding is concentrated. So this Cape May uses this outside portion of the plant, then yellow rump uses this middle portion as well as this lower portion, then black burnian use this portion of the plant, bay bisted uses this portion of the plant, etc. Then the next option is the competitive release. Now, what is the competitive release? The process in which a species whose distribution is restricted to small geographical area because of the presence of competitively superior species is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed. So this is the competitive release और ये जो competitive release है दो organisms के बीच में होता है अगर दो organisms और दो species है और उसमें से एक species का जो distribution है वो एक small geographical area में restricted होता है बट वो रेस्ट्रिक्टेड क्यों करता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवली सुपेरियर स्पीशीज उसके पास ही एक सुपेरियर स्पीशीज होता है वो उससे कंपटीशन करता है इसलिए जो फर्स्ट स्पीशीज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है एक स्मॉल पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में बट अगर हम वो जो कॉम्पिटिटर है उसका सुपेरियर कॉम्पिटिटर है उसको एक्सपेरिमेंटली अगर अब हम रिमूव कर लेते हैं तो वो जो फर्स्ट स्पीशीज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो एक्सपांड हो जाता है और वो जो डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज एक्सपांड्स ड्रामेटिकली सो ग्रेटर नंबर में उसका एक्सपांशन हो जाता है और इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज so competitive release occurs when two species competing for the same resource disappears thereby allowing the remaining competitor to utilize the resource more fully than it could in the presence of the first species. So जो अब जब हम दो स्पेशीज एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक स्पेशीज का डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिटर अगर हम कॉम्पिटिटर रिमूव कर लेते हैं तो वो जो रिसोर्स है वो कम्प्लीटली यूटिलाइज कर लेता है फर्स्ट स्पीशीज और उसका एक्सपेंशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और उसको इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज एग्जाम्पल ऑफ दिस कॉम्पिटिटिव रिलीज इज बैलेनस एंड Camelus snails and in the next lectures I will give the details of this competitive release. The next option of this question is the mutualism. So all you know what is a mutualism. Mutualism is again the relationship between the two organisms or two species and in this case it is a mutual relationship because both the organisms are benefited in this case. And so both the organisms are benefited, both the organisms get increased fitness and therefore this is the plus plus relationship. The most common example is lichen, which in which the fungus and algae or cyanobacteria live together. Algae give food to the fungus, whereas fungus gives shelter to the algae. One more example is the mycorrhiza, which associate with the fungi and the roots of higher plants. In this case, what fungi do? Fungi help the plant in the absorption of essential nutrients from the soil, while the plant in turn provides the fungi with energy yielding carbohydrates.
Last option is the predation. So as all you know that what is a predation? Preying of one animal on the others. It is a plus minus relation. Uh, it is obvious plus minus relation. One organism is eaten up by other animal, and one organism is in the harm and other organism gets the benefit. So example is the tiger eating deer. So in this case, so इस क्वेश्चन का आंसर है resource partitioning. So the question is, in spite of interspecific competition in nature, which mechanism the competing species might have evolved for their survival? So for the survival of the organisms always try to prevent the competition. And if the competition is between two species, which is the interspecific competition, at that time the resource partitioning is a mechanism which is used to prevent the competition. So जब भी दो ऑर्गेनिजम्स का निश सेम होता है, फंक्शनल एरिया सेम होता है, तब उनको सरवाइव करने के लिए और कंपटीशन अवॉइड करने के लिए एक मैकेनिज्म वो यूज करते हैं, और उस मैकेनिज्म को रिसोर्स पार्टीशनिंग कहते हैं. Most of the time they change their feeding and foraging habitats and do resource partitioning and do their survival. So if you like all the contents of the video as well as details of the concepts, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.